on the behalf of organizing committee of 3 days National Symposium on Trends and Innovation in the Pharmaceutical, Biochemicals and Biosciences. In this national level symposium, students from different parts of the country and abroad enhance the quality and quantity. Well, Albert Einstein said, if we knew what it was we are doing, it wouldn't be called research, would it? It is on occasions like this we get opportunity to test our knowledge and understanding. Now, with the blessing of sign, we will start the event with enlightening the lamp. In the temple of education, a lamp of knowledge with the feeling of service to the nation would be the ideal situation in the world, following the footstep of our elders, the honoring our custom. I request Honorable Vice Chancellor, sir, to enlight the lamp. Thank you, sir. Now, moving ahead with the blessing of Ma Saraswati for ongoing schedule, I request the intellectual personality of the university, our Pro Chancellor, Engineer Tushar Punj, one of the youngest entrepreneur. May I now invite the Engineer Tushar Punj, sir, for address the session. Over to you, sir. A very good morning to all. I hope I'm audible to the other side. Yes, sir. Great. Yeah. So yeah, good morning. First of all, greetings from Sri Sai University, Palampur. It's a beautiful day today that we all have gathered on this online platform for a mission, for an idea to transform this sector, pharmacy sector. We are very lucky that we have got a very great dynamic team of eminent speakers who have joined us today for this great session, Trends and Innovation in Pharmaceutical, Biochemical and Biosciences. I think with the India coming as a superpower, a lot of sectors we see are growing on a very big space. And when we talk about big space, India being the pharmaceutical hub, supplying full the whole world is being dependent on India for this pharmacy demand. So we have got a huge responsibility to upskill, to upgrade, to make sure whatever the deliveries are going on, it should be high class, high quality. And the education sector really needs to step up. And I am very glad, very lucky. Sri Sai University Palampur is taking leap steps and discussing, making a forum to discuss the challenges, the technological update, and a lot of things. I would love to congratulate my Department of Pharmacy today for their amazing seminar, because I think we are very blessed that all of us have gathered in this space. So Dr. Amit and his team has done a great job today for organizing this very 2 days symposium. And my heartfelt gratitude to whole Sri Sai University staff, the Vice Chancellor, the Registrar, the Pro Vice Chancellor,
and whole staff who for joining here. And I would also like to welcome our eminent speakers who have taken their special time out for giving their immense knowledge to us, for our students, for our teachers, which will go a long way. One thing I would just uh, also share with a lot of people that the pharmacy sector, I was discussing with my team that if you see computer science, it has evolved in from last 10 20 years. It has been evolving with a lot of technological updates coming in with their products. And this, I was also thinking that if we can also think about a pharmacy with uh, business or pharmacy with analytics, I think being a pharmacy sector, a lot of sectors comes up. I think Shisa University is also in planning to introduce new courses this year so that we can address the nation's demand on coming up with this. And this is my responsibility to welcome you all once again to this beautiful symposium. On behalf of Chancellor Shri S.K. Punji, he has appointed me to address this. I am very blessed to take this opportunity to interact with you all. And I will be coming here and there, listening to all of you with this symposium so that we all share the knowledge and also take the pharmacy forward in this country and also in this world. Thank you so much for this beautiful time, beautiful address. And thank you so much. Shisa University Palampur is grateful to have you, all of you, on this board. Thank you so much. Jai Hind. Thank you, sir. Now, I would like to invite Dr. Amit Sharma. Thank you, sir. I would like to invite Dr. Amit Sharma, the convener of the symposium, for welcome address. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. Good morning, Honorable Chancellor Engineer S.K. Punj sir, Chief Managing Director Mrs. Tripta Punj ma'am, Pro Chancellor Engineer Tushar Punj sir, Honorable Vice Chancellor Professor Dr. R.S. Rana sir, Pro Vice Chancellor Professor Dr. N.N. Sharma sir, Registrar Professor Dr. Jahid Ali sir, Dean Engineering Professor Dr. Raminder Pritpal Singh sir, Speaker of the event, my dear colleagues, friends, ladies and gentlemen. I, Dr. Amit Sharma, being the convener of the symposium, welcome all of you from abroad with and within India to participate in the 3-day national symposium on trends and innovation in pharmaceutical, biochemical and biosciences from 13 to 15 Feb, organized by Science School of Pharmaceutical Education and Research, Shri Sai University Palampur, Himachal Pradesh, sponsored by PharmaLog. Shri Sai University Palampur is a multidisciplinary and world-class university located amidst the sylvan surrounding of Kangra Valley, Himachal Pradesh. Established as state private university notified by UGC under section 22 of the UGC Act 1956 on 1 June 2011. The university provides access to the high quality education, cutting edge research and development in the field of pharmaceutical sciences, engineering and technology, applied and biosciences, management and information technology with close interaction with industry. It gives me immense pleasure to announce that our university is going to start MPharm, BALLB, MSc in Environmental Science and different courses in monitoring and adventure sport in tie-up with India Monitoring Foundation, New Delhi. It is a matter of proud feeling to announce that our university is the first university in India to start the course of monitoring and adventure sports to promote the adventure activity in the country. I take the opportunity to wholehearted welcome to Honorable Chancellor Engineer S.K. Punj sir, Chief Managing Director Ms. Tripta Punj ma'am, Pro Chancellor Engineer Tushar Punj sir for your blessing, cooperation, motivation and support.
a heartily welcome to pillar of the university. I extend my warm to welcome our Honorable Vice Chancellor Professor Dr. R.S. Rana sir for his support and motivation. I further take the opportunity to welcome our Pro Chancellor Professor Dr. N.N. Sharma sir for his help and support. I extend my cordial welcome to our Registrar Professor Dr. Jahid Ali sir for his all-time cooperation and support. It's matter of the immense pleasure to welcome our speaker of the event, Professor Dr. Santosh Kumar Verma, Professor Dr. Mahinder Singh Ashawat, Professor Dr. Girish Kumar Gupta, Dr. Shamim Ahmed Bande, Dr. Vijit Agarwal, Dr. Hitesh Kumar, and Dr. Harvinder Singh. On behalf of the entire Shri Sai University family, I extend a hearty welcome to you, Your Excellency, and thank you for accepting our invitation and gracing this function. Your presence among us, the virtually, is indeed inspiring and reassuring. A warm welcome to you and Your Excellency, sir. I also take this opportunity to extend my warm welcome to Dean and heads of the department and faculty member of the university. I extend my warm welcome to our technical advisor, Professor Dr. Raminder Pritpal Singh, and technical team member, Engineer Sandeep Rawat, Engineer Shivanshu Katoch, and Miss Nandini, who help us resolving any technical issue for success of the symposium. I would like I would also like to acknowledge and extend my warm welcome to Pharma Law Coordinator Mr. Amit Jha and team members for sponsorship and wide coverage. I extend my cordial welcome to Dr. Meenakshi Sharma and Ms. Pratyanja Sharma, organizing secretaries of the symposium, for their selfless efforts and all-time cooperation. I would also like to welcome coordinators and organizing members of the symposium. I would like to extend my special welcome to all my dear students, delegates, and participants from different regions of the country and abroad for their participation and patience. At last, I welcome you all the National Symposium on Trends and Innovation in Pharmaceutical, Biochemical, and Biosciences, organized by Science School of Pharmaceutical Education and Research, Shri Sai University, Palampur, Himachal Pradesh, and sponsored by Pharma. I sincerely wish that this national symposium will be a huge success, not only as chance to share information about recent research, but also the beginning of a long and meaningful cooperation among fellow professionals. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. May I now request Professor Dr. R.S. Rana, sir, the Honorable Vice Chancellor of Sri Sai University, Palampur, to deliver the inaugural address. Over to you, sir. Thank you. Very good morning to all you all. Honorable Chancellor, Engineer S.K. Punch, Honorable Pro Chancellor Kamar Tushar Punji, worthy Chief Managing Director Ma'am Prita Punch, my esteemed colleagues, eminent speakers, the sponsors, the participants, which are at the national and international level, and their students. In fact, it is indeed a great day for us to the University and Science School of Pharmaceutical Education and Research, Shri Sai University Palampur, which is organizing this National Symposium on Trends and Innovations in Pharmaceuticals, Biochemicals, and Biosciences. Congrats to all participants and the organizers. I welcome you all in this mega event. The topic
of this symposium is of paramount importance, and the deliberations will definitely reach out to the certain important recommendations which will be useful for the mankind at global level. Here, I wish to point out that whatever the research or innovation you are going for, it must be true and based on facts of your findings. It should not be purely academic and to improve your academic scores, but for the betterment of the human beings, keeping in view their problems, health hazards, environment impacts which are occurring nowadays. The interaction and dissemination of ideas or knowledge sharing among scientists, professionals, and students will certainly be beneficial, and this is helpful in the development of quality products while manufacturing the drugs for the good health of the society. Here, I would like to share some important news which appeared last week in the newspaper. This I would like to bring in your kind notice that one of the Vitech student who was or who is 20 years old, she belongs to Akola in Mumbai. She purchased a fairness cream from a beautician and used. No doubt there were good results for a few days. Her face was glowing, was very fair. And from that, her mother and elder sister, they also got inspired, and they also used the same product. But it was not for a long time. Very soon, there was a problem, and all those three, they suffered from a disease of the kidney, that is glomerulonephritis, which is the inflammation due to the excessive collection of the fluid in the glomerulus of the kidney, which help in the filtering process that was hampered. So the matter was reported to doctors. They were also surprised how it happened. And when they analyzed, because the doctors, they asked what the product were used, and that fairness cream that was presented to the doctors, and then analyzed that product, and it was surprising that the mercury content which was required at the desired level, that was more than that, and that created a problem. So it should be taken into consideration when you are doing such things for or the drug manufacturers or others. They should take into consideration the uses of those things which are being used for the humankind, and it should be very, very carefully used and prepared accordingly. So my humble submission that such happening should not occur, and the right service in the spirit, in the true spirit, should be given to the society. So with these few words, I'm very hopeful that the meaningful recommendations, those will emerge out from these 3 days long deliberations, and will be helpful for the stakeholders as well as the academic and the drug manufacturers as well. So with these few words,
I welcome you all again, and especially I thank our Sri Sai University team, that is the Dean Pharmacy, the Dean Academic, uh, and Vice Chancellor Dr. N. Sharma, and our Registrar, who has done a wonderful job to make this event a great event for the university. With these words, once again, I thank you. Thank you all. Thank you so much, sir. I would like to give a brief introduction about our national symposium. In Pharmaceutical, Biochemical, and Biosciences, organized by Science School of Pharmaceutical Education and Research, Sri Sai University, Palampur, in collaboration with PharmaLok. The conference, symposium, and seminar provide an excellent platform for research, new learners, and academians participating from various parts of pool their knowledge on the vital interdisciplinary subject. Pharmaceutical, chemical, and biosciences plays an important role in the eventual concept of the living world. The major focus of symposium is the one of the improvement of health and well-being by recent trends and innovation in various fields of sciences. Pharmaceutical, chemical, and biosciences focus on understanding biological mechanism in disease progression and the therapeutic targets of disease impacting people's lives. This symposium is a global furnished form for all the researchers and academians related to pharma and biosciences to share opinion and learn about important worldwide breakthrough development in drug discovery of the life sciences. This symposium provides an overview of the trends in various fields in 2023. Startups and scales are using digital solutions to enhance the process in pharmaceutical, clinical research, medical devices, and other applications. Now, I would like to take a permission from respective dignities to start the event. Permission granted. So, our first speaker of today's event is Professor Dr. Santosh Kumar Verma. He is presently working as Professor and Principal Quantum School of Health Sciences, Quantum University, Roorkee, District Haridwar, Uttarakhand. He has 17 years of teaching and research experience, published 85 research papers, guided 3 PhD scholars, and presented number of seminar, conferences, workshops. He is life member of many professional bodies and received many awards and recognized. He is president of IPES Uttarakhand State and Secretary, IPGA Uttarakhand State Branch. Also received many awards and recognized from professional organizations. May I now request Professor Dr. Santosh Kumar Verma to address our esteemed participant on the topic biomarker on toxicology. Over to you, sir. Thank you, Ms. Pratyansha, for nice introduction over here. First of all, I would like my uh, thanks for the organizing team of this 3-day symposium and management of Sri Sai University, especially Honorable Chancellor Sir, Honorable Vice Chancellor Sir, and Pro-Chancellor, Registrar, Sir, and especially convener of this event, Dr. Amit Sarma ji and their team. Uh, Today, I have got an opportunity to deliver my talk on a specific topic, that is biomarker of toxicology. I think the screen share is enabled from my side. Yes, sir, it Please is confirm. visible. Yes, sir, it is Okay, visible. thank you. First of all, in any type of research, especially in bioscience, we consider some fact to establish the situation. Either these are at a normal stage or pathological stage, or during the treatment, it comes towards pathological condition
to the normal condition. Some of the biochemical test has been done in every step, and according to that, any physician or researcher uh, understood the situation of the patient. He is normal or still in pathological condition. That all type of biochemical uh, parameters are, you can say, a marker, or because this is the biological system, that's why we are called, this is a biomarker. Uh, अब यहाँ पे मैं बड़े इंटरेक्टिव वे में इसको एक सामान्य तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, तभी मैं आपसे परमिशन चाहूंगा बाइलिंगुअल मैं बताऊं, ताकि जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, जिसमें हमारे स्कॉलर्स, जो हमारे नए बच्चे हैं, वो इस बात को जरा समझें और जरा भारी भरकम ना मानते हुए इसको, इसमें वो अपने आप को इन्वॉल्व भी करें, क्योंकि दे पीपल आर द फ्यूचर रिसर्चर फॉर आवर सेल्फ। तो यहाँ पे एक बात मैं बड़े इंटरेक्टिव वे में बताना चाहूंगा कि सारी जो कायनात है, सृष्टि है, वो मैटर से बनी हुई है, और ये सारे मैटर ये केमिकली डिफाइंड हुआ करते हैं, और इसमें फिजिक्स के भी रूल्स एंड लॉ ये अप्लीकेबल होते हैं। और इसमें एक खास तरह की चीज, जब उसमें चेतना आ जाती है, तो वो उसमें जिसे हम कहते हैं जान आ जाना, तो वो अपने आप ऑटोमेशन में चली जाती है, और ये अपने तरीके से ही अपने, यानी कहने का सजीव लिविंग्स की बात कही जाए, तो वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो सारे के सारे जो क्या साइंस के या पैरा साइंस के जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उनको मानते हुए और अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जब हम बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें कि पूरी तरह से केमिस्ट्री है, चाहे आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यहाँ भी पूरी तरह से केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। हम बात कर रहे हैं, यहाँ बोलने की बात भी आती है, थॉट प्रोसेस भी आता है, ये भी पूरी तरह से बायोकेमिकली ये रेगुलेटेड है। साथ ही आप हियरिंग की बात, जैसे आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं, आपकी दिल की धड़कनें चल रही हैं, आप खाना खाए हैं, उसका डाइजेशन हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी कहने का मतलब है कि इन जनरल सब कुछ बायोकेमिस्ट्री के तहत ही होने वाली चीजें हैं। अब यहाँ देखने वाली बात है कि जब हम इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें कि अब जानकारी लें कि हमने खाना खाया तो हमारे बॉडी में एनर्जी जनरेट हो रही कि नहीं हो रही है, जो हमने खाना खाया उसका कितना कैलोरी काउंट है, ये हम बातों में तो करते हैं, और ये इवन की इसके लिए बहुत सारे ये पैरामीटर्स हैं, उसका भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वहां पे समझने की बात ये आती है, जैसे अब रिस्पिरेशन की ही बात करें तो आपके ऑक्सीजन डिमांड और ऑक्सीजन सप्लाई के बीच में कितना का लेकुना है, ये कोरोना काल में हमने समझने की कोशिश भी की है, उसके हिसाब से वे ऑफ ट्रीटमेंट पे डिफाइन किया। तो कहने का मतलब है ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स जिससे हम किसी नॉर्मल स्टेट को या फिर पैथोलॉजिकल स्टेट को डिफाइन करते हैं, वो सारे के सारे बायोमार्कर के तौर पे जाने जाते हैं। तो ये तो एक लेमन के लिए या एक आम आदमी के लिए बताए जाने वाली बात कि हम कुछ भी कर रहे हैं वो बायोकेमिकली रेगुलेटेड है। डेफिनेटली यहाँ पे एंजाइम सिस्टम, को एंजाइम सिस्टम और हार्मोन सिस्टम काम कर रहे होते हैं, जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली भी रेगुलेट होते हैं। और इसमें कई सारे हमारे जो आयन चैनल्स हैं, उनका भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता है, इनके एक्टिवेट होने या फिर न्यूट्रलाइज होने से भी प्रोसेस में फर्क पड़ रहा होता है। अब मैं रिसर्चर्स के लिए कहना चाहूंगा कि हम कोई भी मॉडल स्टेब्लिश करते हैं डिजीज स्पेसिफिक के लिए, चाहे वो ह्यूमन मॉडल की ही बात करें या फिर प्री क्लिनिकल स्टडी में एनिमल मॉडल की बात करें, तो वहां पे डिजीज कंडीशन आइदर हम लेबोरेटरी में उसके डाइट को लेते हुए या केमिकली इंड्यूस कर रहे हो, या जेनेटिकली नॉकआउट जो एनिमल्स होते हैं उसका हम इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये एस्टेब्लिश करना कि हम जिस डिजीज स्पेसिफिक के लिए काम कर रहे हैं वो मॉडल उस तरीके का एस्टेब्लिश्ड हुआ या नहीं, इसके लिए हमें बायोकेमिकल असेसमेंट करना होता है। फॉर द एग्जांपल, आप डायबिटीज मेलाइटस ज्यादातर काम हमारे फार्मेसी में इस रूप में काफी एकेडमिक रिसर्च के तौर पे हमने किया भी है, और मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं, इसके अलावा और भी चीजें हैं। मैं अभी फिलहाल
ये डायबिटीज की ही बात करूंगा। यदि हमने केमिकली इंड्यूस्ड आइदर एलेक्ट्रॉन या स्टेप्टोजोटासिन, दोनों ही तरीके से इंड्यूस किया जा सकता है, अलग अलग कंडीशन की बात आएगी। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा आइदर कैसे भी हम डायबिटीज मेलाइटिस एनिमल के अंदर इंड्यूस करते हैं, तो वहां पे इस बात को एस्टेब्लिश करना कि वाकई हमारा जो टेस्ट एनिमल है वो डायबिटिक हुआ या नहीं, तो डेफिनेटली इसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स की बात आती है। तो उसमें तो पहले हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की बात करते हैं, ओटी, और वहां पे देखते हैं कि ये आफ्टर द फीडिंग ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन 2 घंटे तक उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल का ये जो है उसकी मॉनिटरिंग करके यदि उस पे काम नहीं हो पा रहा और ब्लड ग्लूकोज लेवल वापस नॉर्मल स्टेट पे नहीं पहुंच पा रहा, तो इसका मतलब है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन वहां पे होना बंद हो गया। तो ये एक तरह से सिग्निफिकेंस की बात कही जाएगी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल आफ्टर फीडिंग ओरली ये न्यूट्रल नॉर्मल स्टेट पे नहीं आ पा रहा है 2 घंटे तक के मॉनिटरिंग पे, तो हम कहें कि चलो ये यहाँ पे इसका इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है या इंसुलिन का फंक्शन नहीं हो पा रहा। तो अब फर्दर उसके ब्लड सैंपल का एस्टिमेशन हम इंसुलिन के लेवल को लेते हुए करेंगे और कंपेयर से करेंगे नॉर्मल एनिमल के साथ जो सेम एज, सेक्स और वेट वाला हो और उसी हैबिटेट में केप्ट किया हो, तो उससे हम मालूम करते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अब इससे कंपैरेटिव स्टडी में हमें पता चल जाता है कि हमारा जो टेस्ट रैट है वो स्टैंडर्ड रैट के रिस्पेक्ट में उसके बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो कहाँ पे इम्पेयर्ड हो रहा है। और यदि यहाँ पे स्टेब्लिश्ड हो जाता है कि वाकई इंसुलिन के प्रोडक्शन की डिफिशियंसी आ गई, तो ठीक है, हमारा मॉडल सेट हो गया। अब यहाँ पे हम इसके ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे जाएंगे और फिर वहां देखेंगे कि हमारे स्टैंडर्ड ड्रग और टेस्ट ड्रग के बीच में कंपैरिजन करते हुए कि वो किस तरीके से उसको बेहतर की तरफ यानी टुवार्ड्स द नॉर्मल हेल्दियर स्टेट पे किस तरह से लेके आ पाता है। तो ये रिसर्चर्स इसी तरीके से मॉडल को अपने लेबोरेटरी में बना के और फिर उस पे ही प्रोसेस ऑन कर रहे होते हैं और मालूम करते हैं कि वाकई ये चेंजेस क्या है जो हमने हाइपोथेसिस बना रखी थी वो उस तरीके से पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि बायोमार्कर एक अपने आप में एक कंक्रीट माइलस्टोन्स हुआ करते हैं और ये सिर्फ अलग अलग पैरामीटर्स के लिए हम अलग अलग तरीके के बायोमार्कर की बात करते हैं स्टडी स्पेसिफिक में, इनके चेंजेस की बात भी देखी जाती है। आज का टॉपिक मैं इन जनरल बायोमार्कर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे मैंने जो आज टॉपिक मुझे आपकी तरफ से दिया गया है नेशनल सिम्पोजियम के दौरान, दैट इज अ बायोमार्कर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। अब यहाँ पे ये मालूम करना बहुत मायने रखता है कि किसी भी ड्रग का, कहते हैं ना एवरीथिंग एक्सेस इज वेरी बैड, यहाँ पे यदि जो चीज हमें अच्छा कर भी रही है, यदि उसकी मात्रा यानी क्वांटिटी यदि हमने मॉनिटर नहीं की, कम या जरूरत से ज्यादा की तरफ चले गए, तो उसका असर होगा। कम करेंगे तो हमें कोई भी इफेक्ट होता हुआ दिखेगा नहीं, और यदि ऑप्टिमम रेंज में रखते हैं तो थेरापेटिक इफेक्ट दिख रहा है, डिजायरेबल इफेक्ट दिख रहा है। और यदि उस लेवल से ऊपर की तरफ हम जाने की बात करें तो डेफिनेटली वो टॉक्सिक रीजन में चला जाता है। यानी कि हम बायो अवेलेबिलिटी की बात करें, बायोअवेलेबिलिटी कर्व को लेते हुए, तो यदि वो टॉक्सिक रेंज में चला गया तो वहां हम किस तरीके से मालूम करेंगे कि वो क्या असर दिखा पा रहा है। Sorry for some technical glitch over here. Now, we just continue with the toxicology cell study, and during that particular, the biomarkers over there. Uh, First of all, you understood about the biomarkers in toxicology. Biomarkers in toxicology furnish indication on the effect of toxicant upon a specific target, whether cell, organ, or system, and they can be biomarkers of exposure specifically or effect. Uh, as the organ upon toxicant are inducing complex damages
Example, nervous system, cardiac system, liver, renal, reproductive system, immune system, etc. on biomarker cannot eh, characterize the complex effect, and therefore a panel of biomarkers comprising several domains could better characterize uh, get a certain toxicological process. You understood about this thing in these specific points. First of all, in introduction, overview of toxicity mechanism and concept of biomarker overview. And second one is the detail on selected important toxicity mechanism. And third one is in vitro and in vivo biomarkers or assay as such. First of all, we understood about the concept of toxicity. Toxicokinetics and toxicodynamics, we categorize toxicity study in two different ways. First of all, evolution of toxicity, we design the model for the toxicity and expression of toxicity that is called ICX. मतलब ये inhibitory concentration at X extent and exposure of time, how much time they require to get the response as such. First, then acute versus chronic toxicity versus mechanism. We better understood about the doses and or you can say exposure of the drug during the study. Uh, if it is in a one time, that is called acute dosing. If it is multiple time, then it is called chronic effect and their mechanism as such. Uh, Last one is in this slide, mechanism of toxicity, cellular and biochemical event. Cellular and biochemical events are takes place during this study. A general species independent study view, we can say in vitro effect, sorry, in vivo effect. Uh, Next, toxicokinetics. What is the kinetics happening during the toxicological study? Processes involved in the fate of toxicant effect entering the organism. You better understand the kinetics, pharmacokinetics. We express here as such absorption or membrane transport of the toxicant in vitro, sorry, in vivo, then transport in the body fluid net point and distribution in body, in fat or a specific organ, then it might be metabolized, then transformation inside liver, kidney, the skin, etc. Then after elimination from our body, from the urine, bile, or from the sweat, or if lactating female, maybe from the breast, feed also. So you better understand the toxicokinetic in the way of ADME, absorption, distribution, metabolism, and excretion. Now, toxicodynamics, we monitor or get a specific observation over here. Interaction of toxicant with the biological molecule, that is membrane, phospholipid, DNA, protein, etc. The covalent or non-covalent bond of the drug that is called the toxicant inside the binding site like receptor and other places. A specific domain in protein, DNA, and the general reactivity takes place during the dynamic effect of the toxicant. Uh, One question arises at here, what affect the specificity and affinity of interaction of toxicant? So we understood in with these particular from this point, toxicokinetics, concentration of both exobiotic or biological molecule. Second one, affinity,
That means structure, physico-chemical parameter of toxicant as such. Uh, Toxicodynamics in continuity with characterization of a specific specificity and affinity. We understood about the pharmacokinetic over here to understood the effect as such. So here a hemostatic concentration or coefficient, that is Ki or Kd, at here Zen matlab xenobiotics and plus biological system. So this complex form a xenobiological system that is expressed as a V1 volume 1. This is the reversible mechanism. This is the reversible mechanism. Ms. Pratansha, if any participant having any question, please make it clear because some glitching, sound glitching from background. So first of all, you end the session, then we will take the queries. Okay. So please, I request to all the participants, please mute your mic to continue smoothly with this presentation. Okay. At here is toxicant that is called xenobiotics plus biological system make a complex of xenobiological. This is reversible. They again split in xenobiotics and biological system. The volume of V1 it is expressed as a V1 and V2. The kinetic part is V1 upon V2. We express the inhibitory concentration of the 50% at here. You can better understand this thing in the next slide. At as lower is Ix, as stronger in the binding of a specific receptor and related toxic effect. This is the outcome of it. And toxicity assessment, biological target, that is a molecule, cell, organism, or population as such. Second one is the chemical definition of the toxicant. And third one is the exposure of biological system to the chemical, like a variable concentration, defined or variable duration, that is time also important at here. Then a conditions like temperature, pH, life stages of the person or subject as such. Then effect assessment is under the changes in relationship to concentration of the toxicant. And last one is the dose response evaluation and estimation of toxicity value. That is the concentration like LDX, yeah, ICX, yeah, ECX, like that type of, or MIC. These are the abbreviation of toxicological parameter. Uh, at here, we understood about the toxicity. Uh, you can understood is this with the exposure, effect, etc. So at the level of exposure of toxicity, the acute dosing or chronic exposure does matter during the study of toxicity. Accordingly, we take the uh, effect of that particular. In the effect of toxicity, like lethal, mean subject maybe get motile after exposure with the toxicant in certain time period or immediately, maybe. So acute dosing, that means in the single dosing of with the toxicant, they have the mortality differently. Sorry,
definitive endpoint comes as a sense of death of the subject. This type of dosing at the high concentration of that particular easy to determine single endpoint, that is death. Intermediate responses are not over here normally in the condition of acute exposure with the uh, toxicant. Then chronic exposure with the toxicant, that is non-lethal. It means we expose the animal or subject with the lesser amount of toxicant. Animal does not die less dangerous. It is depend upon a biochemical which you can use for treatment or test as such. Uh, Endocrine disturbances may be at their, yeah, reproductive reproduction toxicity, teratogenicity, or immunotoxicity, or cancerogenesis, genesis, like a mutagenicity or teratogenicity or carcinogenicity. This type of toxicity may be appear with the chronic exposure with the toxicant as such. Difficult to determine in the multiple endpoint during that particular study we got over there. And more specific, low concentration or larger exposure, that is the long duration with small dosing with the toxicant. Uh, this is, you can say, some unspecific or some you can say at here adaptability. This is the right term over here. Adaptability with the toxicant to the subject may be shown over there, and reflected by specific biochemical changes, that is called biomarker at this condition. Mechanism of toxicity, overview of this. So what is the toxicity mechanism? The interaction of xenobiotic. Uh, Previous slide, I also pronounced the xenobiotic. That means a biological molecule found in the blood, other body fluid, or tissue. That is a sign of normal or abnormal process, or of a condition or disease. Okay. Introduce of xenobiotic with biological molecule, introduction of a specific biochemical event, and in vivo effect of the xenobiotic as such. Biochemical event induced the in vivo effect, that is called mechanism of toxicant, change of in vivo biochemical reflected the exposure and possible effect, that's called biomarker. Here, xenobiotic is the chemical substance that are foreign in animal life. Example like plant constituent, drug, pesticide, cosmetic, if flavoring agent, yeah, fragrance, food additives, or industrial chemical or environmental pollutant. These all are in the category of xenobiotic, and they may exert the effect of toxicity over the living being. Physicochemical characteristics of the xenobiotics is solubility and lipophilicity. You understood any substance, either this is food or chemical or drugs, the capacity to introduce inside the body is directly depend upon their solubility and lipophilicity as such, to easily introduce and cross the bio membrane. Plasma membrane to inside the living body. And another is reactivity and redox characteristic of that particular molecule, and known structure feature related to the toxicity, that is called organophospho phosphates, and structurally related molecules act similar way. Uh, then bioavailability and distribution.
This is directly proportional to the effect of that particular drug, or at this place, toxicokinetic as such. Then after biological target, that is receptor. After the introduction inside the body, the toxicant or xenobiotic interact with their receptor. The availability of the receptor is one of the important factor to expression of toxicological effect. That is the species specific matter at here for the availability of receptor as such, then tissue, then a storage specific, stage specific effect also we are looking into, then natural variability, and individual to individual effect of a drug, can maybe going to change. Uh, Maybe one drug uh, get effective on me, and the same drug at the same situation may be not affected to my neighbor. Maybe it is possible because many factors involved to get the effect of any drug and their function as such. Concentration of both xenobiotic and receptor, that means availability of the drug molecule and the receptor is directly proportional to get the effect of at this condition. And now we understood the mechanism of toxicity, how the toxicity is going to take place. First of all, we understood the tissue-specific mechanism at here, hepatotoxicity, neurotoxicity, or nephrotoxicity, or hematotoxicity. We can understood the xenobiotics goes from various organ system, and what effect exert at that place is important. Then a toxicity of reproductive organ, it may be takes place, or embryo toxicity developed during the development of the embryo inside the pregnant subject. It may takes place. This is called also teratogenicity, and immunotoxicity maybe. This is a study under the tissue-specific mechanism. And then a specific species-specific mechanism. Maybe some drugs exert their effect on the specific species and not doing the work on the another one. This is a classical example in the pharmacognosy. That is, Nux vomica seed is good for, or you can say no toxic for the human, but Nux vomica seed is lethal for the dog. Hmm. Because dogs are not tolerate the Nux vomica poisoning. Uh, you can understood with this example. Here, photosynthetic toxicity versus teratogenicity. One of the specific mechanism. Second one is the endocrine disruption. This is also invertebrate, but versus vertebrate, we can see this type of sign and symptom to with the xenobiotic exposure. Uh, uh, I give the example in the coming slide. Then developmental stage specific mechanism, embryo toxicity. In this toxicity of cell differentiation process, we can understood. And now we come on the main topic, that is called biomarkers. Uh, we understood previously in the toxicity as such, and now we are talking on the biomarkers. That is, please mute your mic. Thank you. Now we are come on the main topic of biomarker. How to establish biochemically
that toxicity has been takes place during the study. Once as per the FDA, new guidelines is there. I want to share the slide of official website of FDA to understood very well. First of all, yeah, just take the definition of the biomarker. Biomarkers are key tools and can provide crucial information on the complex cascade of event and molecular mechanism underlying a pathophysiologically. So biomarkers is a biological system with a sufficient long half-life, which allow location where in the biological system change occurs and to quantify the change. Now I would like to show the information given by the FDA. Yes, I think this slide is visible to you. Yes, sir. No, 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 no. This, another slide is not visible. Sir, Oops. right now the One second, bachche. Entire screen option is the good. Now it is visible. yes, sir. Yes, yes, yes. Yes, sir. Mhm. This is the guideline for the roadmap of innovation in the drug development. The stories about the FDA new biomarker qualification program comes under this slide. I cannot read all the thing, but specifically, yes, yes. FDA prediction toxicity roadmap. Hello, I'm audible. Hmm. Yes, sir. FDA predicts a predictive toxicological roadmap. During this particular, we understood the biomarker of toxicity and precision mechanics over here. Uh, you just look into the another one. A biomarker qualification program considers the three pathway at this stage. First is drug approval process. Under this individual drug development pathway, it is based upon the agreement with the division in the context of a specific drug development program. This is the regulatory aspect comes under the drug approval process. Second one is the scientific community consciousness. What is the importance of the new drug which is going to be developed for the well being of the mankind. That is the scientifically supported community implementation. Scientific community consciousness likely broadly widely used biomarker, appropriate scientific support, or generally accepted by the by expert in the field. If any laboratory condition established a certain type of biomarker, it means this is comes under the different condition or different zone over the globe to report in the specific condition of that particular biomarker. यानी हमारे यहाँ यदि हमारे लेबोरेटरी कंडीशन में यदि कोई बायोमार्कर हमने डिफाइन किया और जिस जो किसी स्पेसिफिक स्टेज के लिए वो डिटरमाइन कर रहा है तो डेफिनेटली वो किसी और भी लेबोरेटरी किसी और भी कंट्री के अंदर उनके लेबोरेटरी कंडीशन में यदि हम सेम परफॉर्म कर रहे हो तो वहां पे वो उसी तरीके से दिख रहा हो ऐसा नहीं है कि यूएस में कुछ और दिख रहा हो इंडिया में कुछ और दिख रहा हो जापान में कुछ और दिख रहा हो चाइना में कुछ और दिख रहा हो तो यहाँ पे बायोमार्कर की क्वालिफिकेशन को लेते हुए ये एफडीए का बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है और इसमें इनने अपना लॉ भी 2021 में इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो इस तरीके से हम बायोमार्कर को हम क्वालिफाई कर पाते हैं तो डेफिनेटली ये हमारा जो बायोमार्कर है डिजीज स्पेसिफिक या स्टेज स्पेसिफिक केस स्टडी के लिए बड़ा मायने रखता है तो इसकी लिस्टिंग भी हो चुकी है और आगे काम चल भी रहा है क्योंकि साइंस हमेशा ही डे टू डे प्रोग्रेशन के लिए ही होता है आज की डेट में जो फैक्ट हम मान रहे हैं हो सकता है क्योंकि डेट में वो चीजें हमें बदली हुई भी नजर आए तो इसलिए ओपन हार्टेडली ओपन माइंडली
हम इसको कर रहे होते हैं। तो यही वाली बात जो थर्ड स्टेज है इसका पाथवे का, वो आपका बायोमार्कर क्वालिफिकेशन प्रोग्राम है। तो डेफिनेटली हम इसको देखते हैं और इसको जान रहे होते हैं। तो यहाँ पे बायोमार्कर क्वालिफिकेशन प्रोग्राम जो एज सच जो मैं दिखाना चाह रहा था, क्वालिफिकेशन इज ए फॉर्मल रेगुलेटरी रिव्यू एंड acceptance process of biomarker for their use in drug development। यहाँ पे देखा जाता है कि स्पेसिस की बात, अब अल्टीमेटली सारे ड्रग का डेवलपमेंट हम ज्यादातर ह्यूमन काइंड के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन ह्यूमन काइंड पे ड्रग की टेस्टिंग नहीं करते एट द स्टार्टिंग, वहां प्री क्लिनिकल स्टडी में जाते हैं। तो वहां स्पेसिस स्पेसिफिक की बात कही जाती है, जो हमने लेबोरेटरी में एनिमल केप्ट किए हुए हैं, चाहे वो आपका लोअर एनिमल्स हो या फिर हायर एनिमल्स की बात की जाए, तो वहां पे उनके अंदर जो ड्रग यानी जीनोबायोटिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसका इफेक्ट किस तरीके से आ रहा है, वो किस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है, उसका पाथवे क्या होगा, उसका जो बायोकेमिकल जो मार्कर की बात हम यहाँ कर रहे हैं, अब मैं मार्कर कंफर्टेबली कह सकता हूँ बायो मार्कर्स, तो वो जिसका हाफ लाइफ ज्यादा है, यानी वो ऐसा नहीं है कि इंटरमीडिएट बना और तुरंत ही खत्म हो गया, जिसको हम एस्टिमेट नहीं कर पाए उसकी कंसंट्रेशन को, उसके क्वांटिटी को, तो वो हम बता नहीं सकते ना कि वो स्पेसिफिकली ये है भी या नहीं है। तो आप इस बात को मानते हुए कि वही सेम चीज जो हमने प्री क्लिनिकल स्टडी में बायोमार्कर के तौर पे किसी डिजीज स्पेसिफिक या कंडीशन स्पेसिफिक के लिए एस्टेब्लिश किया है, वो अल्टीमेटली ह्यूमन काइंड के भी दौरान, इस तरह से एक्सपोजर के दौरान वो दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है, या फिर चीजें बदल जा रही हैं। तो यही बात qualification is a conclusion that within the start use the biomarker can be relied upon the upon to have a specific interpretation and application in drug development and regulatory review. That's called biomarker qualification results in the scientific acceptance and regulatory uh, certainty for the use of biomarker in drug development. Okay, then biomarker qualification program the biomarker discovery, biomarker testing, then biomarker evaluation, analytical and clinically also, and biomarker qualification. This is undergo in 4 different stages. And this the biomarker program comes under the drug developmental need that first of all in the context of use, why we are using to this particular, then a level of evidences comes over here, then qualification of the biomarker, and then this is used for the drug developmental solution. This is the 21st century Cure Act under Section 507, qualification of drug development tools. I just show this particular on to you on the my presentation. Then comes for the our main slide. I think slide change over here. Potential? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Because I have only one screen, na? That's why I cannot visualize what I am going to change or not. Okay. Then application in the medicine, biomarker, use of the biomarker, or you can say application of the biomarkers in medicine. Uh, just an ancient example, in the era of Hippocrates, the urine color also for the estimation of health status, either it is good or not, health is good or it becomes bad for the sign and symptom as such. So you can say biomarker is not a new terminology or tool to establish the healthier or ill condition for mankind. Okay, toxicology. In the present status, the identification of the marker of long years, because in the during the
exposure with the toxicant, the sign and symptom we can study is not safer for the mankind. In human, it becomes a response for in the form of carcinogenicity, that is in the form of cancer or malignancy, you can say. Then ecotoxicology. Nowadays, we have the much more pollutant in the environment and industrial, or you can say change over the environmental condition these days. Also produce this type of ecotoxicological condition. We expose with the various type of the you can say pesticide in the drinking water or in the vegetable, or you can say in the milk, uh, so on. We never um, uh, you can say हम बच ही नहीं सकते इससे कि टॉक्सिसिटी या टॉक्सिकेंट्स के एक्सपोजर से हम अपने आप को या अपने बच्चों को बचा पाए। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखना होगा कि हमारा कहते हैं इकोसिस्टम में जो टॉक्सिकेंट्स इन्वॉल्व हो चुके हैं उसका हम पे क्या असर पड़ रहा है। तो दिस इज द chronic study, chronic tox, yeah, comes under the chronic exposure with the toxicant as such. Early markers of the toxic effect. This is the helpful during the study. And then cellular toxicity mechanism comes under the membrane non-specific toxicity, that is called necrosis. That means erupts from the cell line from the layer. Second one is the inhibition of enzymatic activity. Third one is toxicity to signal transduction. Fourth one is the oxidative stress. Stress, that means redox toxicity. Then fifth one is the toxicity to membrane gradients. Sixth one is the ligand competition, receptor mediated toxicity. This is called. And seventh one is mitotic process of microtubules toxicity. And next one is the DNA toxicity. That means the mutation takes place, either point mutation or gene mutation over here. That is called genotoxicity. And next one is the defense processes as toxicity mechanism and biomarker. That is called detoxification or stress protein induction. Ercosis or non-specific toxicity comes under this point. All organic compounds are necrotic in particular concentration. That means under the high concentration, every organic compound are the necrotic in nature. Then compounds are considered to affect membranes. That is called non-specific disruption of fluidity and protein function. Then related to lipophilicity, that is log P or concentration of water, tendency of compounds to accumulate in the in body lipid, including membrane. Then the toxicity effect occurs at the same molar volume or all necrotic compounds. This will depend upon the volume of distribution principle. Then enzyme inhibition toxicity mechanism. In this, million of enzyme present in the living body to perform many type of function over here versus a million of compound as such in the body, body fluid, membrane, and cytoplasm and organ, all over the different type of enzyme present there. Then compounds and enzyme that inhibit the enzyme, maybe Indo, sorry, enzymology interaction of xenobiotic with the enzyme, competitive versus non-competitive effect over here, active site versus site domain maybe एक काम कर सकता है. Then a specific affinity, यानी site of attachment पे उसका competitive तरीके से वो इफेक्ट करे, इनहिबिशन या इफेक्टिव कंसंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है.
कि वो वहाँ पे जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा उस साइड पे वो मॉलिक्यूल एडहेयर करके अपना इफेक्ट को शो कर रहा होगा। तो यहाँ स्पेसिफिक एफिनिटी इस तरीके से समझें। देन आफ्टर एंजाइम इनहिबिशन example of that particular, I previously stated that I could exemplify the particular situation. First of all, acetylcholinesterase. You heard this name of the enzyme which metabolize the acetylcholine all over the body. Specifically, the new students also know about this. We uh, neuro this is shown under the neuromuscular junction at which we show how to muscle contract under the influence of neurotransmitter over there. So neuron and sarcoplasmic uh, intermediate, the in between the space, this particular enzyme acetylcholinesterase is available when the neuron discharge the acetylcholine and comes on the receptor bounded over the membrane of the muscle. Uh, they bound and started the cascade of event to contract the muscle. After the effect, the acetylcholine get metabolized with the acetylcholinesterase enzyme. But you also studied this is कि organophosphate pesticide, all the pesticide under the category of organophosphate, it blocked this particular enzyme, acetylcholinesterase, and prevent the further metabolism of acetylcholine. इन ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर चुका होता है वो फर्दर वो रिलीज नहीं हो पाता, नॉर्मल स्टेट में नहीं आ पाता, तो दैट्स वाई वो टॉक्सिसिटी इस तरीके से अकर होती है, यानी इस तरह से दिख जाता है। आप आगे स्ट्रक्चरली भी आप देख सकते हैं कि हाउ acetylcholinesterase get inhibited with the organophosphate pesticide. Second one is the microbial calcium channel and ATPase के ब्लॉकेज की बात कही गई है। देन आफ्टर इनहिबिशन ऑफ हिम, यानी कि आपका आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो वहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी चेन अवेलेबल होता है, जो साइनाइड की पॉइजनिंग की वजह से ये रेस्पिरेटरी चेन बिकम अरेस्ट एंड सडन डेथ में occurs. So inhibition of heme, specifically respiratory chain, with the toxicity of cyanide. Then after D-amino livolene acid dihydrolase, that is called ALAD, is inhibited with the help of lead poisoning. Then next example is inhibition of proteophosphatase, phosphatase with the help of microcystine. This is comes with the comes from cyanobacteria. I show in the next slide in the detail. And non-competitive inhibition changes in a tertiary structure with the metal toxicity of टू SS बॉन्ड, यानी सल्फर सल्फर बॉन्ड में ये चेंजेस लाने की बात कर रहा है। तो इसको विजुलाइज करते हुए मैंने स्टाइल कोल्ड स्टोरेज के इन्वेंशन को आपको पहले ही बताया था कि हाउ टू गेट अफेक्टेड विद द ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड एंड द स्टाइल कोल्ड स्टोरेज एंजाइम get inhibited and the effect of acetylcholine is continued for a long time. Second one, inhibition of a calcium ion channel ATPase by DDE. So DDE means you also know the DDT, one of the pesticide. It inhibits the calcium ion channel ATPase. The DDE means diphenyl dichloroethylene. तो
यहाँ पे आपने एक बड़ा ही सुंदर और एक क्लासिकल एग्जांपल जाना होगा कि डीडीटी का इफेक्ट, अब खैर डीडीटी बैन कर दिया गया है यूज करने को लेते हुए, एक टाइम में मलेरिया उन्मूलन जो हमारा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का एक पार्ट रहा था, मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत डीडीटी का इस्तेमाल काफी लंबे समय तक होता रहा। इसका जो साइड इफेक्ट हमें देखने को मिला, इसमें जो इकोसिस्टम में जो लैंडमैन का रूल है, जिसमें 10% रूल की बात कही जाती है कि 10 किलो घास यदि एक बकरी या फिर जो भी हिरन खाएगी तो उसका 1 किलो बनेगा, वो 1 किलो मांस यदि शेर खाएगा तो उसका 100 ग्राम उसके बॉडी में लगेगा। तो यहाँ पे ये इकोसिस्टम का जो बेसिक कंसेप्ट है, ये समझने की बात रहेगी कि हमने डीडीटी या आज के डेट में पेस्टिसाइड भी यूज कर रहे हैं, वो सब जगह स्प्रेड हो रहा है। तो सब जगह स्प्रेड हो रहा है तो उसका एक्यूमुलेशन कहीं ना कहीं, मान लिया कि हमने पानी में डाला, हमने पेड़ पौधों पे डाला, हमने घास पे डाला, तो डेफिनेटली हम ये तो मान के चलते हैं कि हमने वहीं डाला, वहीं का वहीं रह गया। ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसका जो क्लासिकल एग्जांपल जिसके बारे में बताना चाहूंगा कि कैल्शियम आयरन चैनल का जो ब्लॉक होता देखा गया है डीडी या डीडीटी की मदद से, उसका बड़ा जो इफेक्ट है वो आपका थर्ड एग्जांपल को ही मैं आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड एग, इसको लेते हुए। तो यहाँ पे फाल्कन फाल्कन जो गिद्ध होता है, गिद्ध का की आबादी ग्रेजुअली कम होती चली गई, जो हम सबने सुन रखा है। तो इसका जो फाइंडिंग देखा गया कि डीडीई क्या होता है कि ये एक्यूमुलेट कर जाता है, पहले हम घास पे डाले या कहीं भी, तो वो हमारे बॉडी के फैट के साथ इसका बॉन्डिंग होता है और वो धीरे धीरे इकोसिस्टम के हायर लेवल तक पहुंचता चला जाता है। आप देखिए वल्चर की बात करें या फाल्कन की बात करें, खासकर या वल्चर को ही लेकर आ जा रहा है, दीज आर द मृत भोजी, यानी ये क्या कहते हैं, सेप्टोफेजी होते हैं, यानी मरे हुए को ही खाते हैं। तो डेफिनेटली जो मवेशी सारी जिंदगी घास खाती रही और वो मर गई और उसका जो कहते हैं सड़ा हुआ मांस है वो हमारा वल्चर खा रहा है, तो वो एक्यूमुलेट सारा डीडीटी जो उसके पास था, उसका कुछ न कुछ पार्ट उसके अंदर गया। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जब उसको एग ले करने की बात कही जाती है, जो अंडा देता है, तो जाहिर सी बात उसका आउटर कवरिंग में कैल्शियम की का एक लेयर होता है जो कि क्या करता है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये डीजीई की वजह से ये जो दिक्कत आई, ये आती देखी गई कि कैल्शियम ये मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आई, तो उसमें क्या हुआ कि बर्ड का एग का जो सेल है वहाँ कैल्शियम का डिपोजिशन कम हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्री मेच्योर हैचिंग की बात आई कि अंडा चूजा निकालने से पहले ही टूट गया। तो इसकी वजह से इसके पॉपुलेशन में बहुत ही ड्रास्टिकल चेंजेस आते देखे गए, जो थैंक्स गॉड कि हमारे साइंटिस्ट को वक्त रहते या वक्त गुजरते गुजरते पता चला। फिर हमारे गवर्नमेंट ने भी डीडीटी के इस्तेमाल को बैन किया कि इसका बड़ा ही बुरा असर होता चला जा रहा है। मच्छर मरे तो नहीं मरे, लेकिन पता चला इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंसेज आना शुरू हो गई। तो इसका इंसानों पे भी असर पड़ा, लेकिन वो ज्यादा प्रोनाउंस नहीं। ये एक क्लासिकल एग्जांपल था कि कैल्शियम आयन चैनल का जो कहते हैं इनहिबिशन किस तरीके से एडीडी की मदद से होता है। तो ये दिस इज द टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट ऐसे। तो यहाँ पे ये क्या करता है, जेंडर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल हुआ करता है जो आपके आयन चैनल्स में बड़ी मदद कर रहा होता है, चाहे बॉडी के कॉन्स्ट्रक्शन की बात हो या फिर आपका मैंने बर्ड एक की बात भी बताई, इसका कंसंट्रेशन रेगुलेटेड बाय द कैल्शियम आयन चैनल एटीपीएच की बात कही जा रही है। तो ये सारी चीजें मायने रख रही होती है टॉक्सिकेंट जो हम जीनो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के तौर पे जान रहे हैं। देन आफ्टर साइनाइड पॉइजनिंग को लेते हुए मैंने एग्जांपल बताया कि किस तरह से आपके हिम के अंदर ये साइनाइड आता है और आपका ऑक्सीडेटिव जो चेन है उसको ब्लॉक कर देता है और इंस्टेंटली जो पर्सन है जो एक्सपोज होता है साइंस से वो किस तरह से कोलैप्स कर जाता है। तो इस तरह से आप देखें ए लैट का इनहिबिशन का मैकेनिज्म काफी लंबा है। मैं ये पीपीटी आप लोग से शेयर कर दूंगा, आप ऑर्गेनाइजिंग टीम से आप ले सकते हैं। मैं इसको फर्दर यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपका टाइम वैल्यूबल टाइम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मेरा भी टाइम पूरा होता जा रहा है। देन पीपीएज इनहिबिशन बाय द
माइक्रो सिस्टीन की बात कही गई है। माइक्रो सिस्टीन, जैसा मैंने आपको बताया कि साइनो बैक्टीरियम यानी ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कही जा रही है, उसके थ्रू ये प्रोड्यूस हो रहा होता है। ये भी आपको टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये यानी प्रोटीन पीएच की बात कही जा रही है, जो कि आपका फॉस्फेट यानी एटीपी एडीपी में बनता है, और एडीपी वापस एटीपी में ये कहते हैं, क्या कहा जाए, ये आपका टू डायरेक्शनल मैकेनिज्म है कि कैसे एटीपी अपना एडीपी में कन्वर्ट होगा, फिर उसका फॉस्फोराइलेशन होता है तो वो वापस एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से एनर्जी का बनना और टूटना, ताकि आपका बायोलॉजिकल फंक्शन होता रहे, बिकॉज एटीपी इज ऑल्सो कॉल्ड ए एनर्जी करेंसी इन द लिविंग सिस्टम। तो यहाँ पे ये इनहिबिट होने की बात कही जाएगी। जब आपका एनर्जी करेंसी नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है कि बॉडी का सारा मैकेनिज्म, चाहे वो आपका स्ट्रक्चरल हो या फंक्शनल हो, वो रुक जाने की बात कही जाती है। तो ये टॉक्सिसिटी का भी, ये भी क्लासिकल अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे बायोमार्कर के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। नाउ आई कम at the end slide, conclusion of biomarker of toxicity. In conclusion, the discussed biomarkers are potential complementary tool. This is not a basic tool, because we also understood the sign and symptom, and establishing with the help of this particular tool of biomarker, we confirm the situation or condition of the disease during the study. Then, if pharmacodynamic monitoring using biomarker is, however, still in its early stage, uh, optimal combination of biomarkers seems to be necessary. This is इन अर्ली स्टेज। ये हो सकता है इसके अलावा भी और भी क्रिटिकल चीजें हमें मिल जाए जो साइंटिस्ट इसको देखने में लगी हुई, लेकिन बावजूद इसके बायोमार्कर एक इम्पोर्टेंट टूल आज के डेट में रिसर्च के दौरान हो गया है। देन आफ्टर बायोमार्कर इन टॉक्सिकोलॉजी इज एन इम्पोर्टेंट फॉर एवरी toxicologist, because the scope of the volume is greater than simply identifying indicators of adverse consequences of toxicity within minimum, but sufficient background and experience, a toxicologist will discover how important aspects of toxicology are practiced using biomarker. यानी कहने का मतलब है कि अनुभव के आधार पे भी एक टॉक्सिकोलॉजिस्ट इस बात को एस्टेब्लिश कर सकता है कि ऐसा यदि दिख रहा है तो हुआ क्या होगा। तो ये कंटिन्यूसली होते रहने वाली बातें हैं जो बायोमार्कर आज के डेट में एस्टेब्लिश्ड है। तो डेफिनेटली वो अपने क्वालिफिकेशन को पूरा करके आज साइंटिफिक कम्युनिटी में अपनी जगह बनाया है। हो सकता है इसके अलावा भी कई सारी चीजें और भी हों जो कि हमारे लिए आने वाले टाइम में हमारे रिसर्चर्स को मदद दे सके। तो मैं अपनी बात को यहीं रखना चाहूंगा, खत्म करना चाहूंगा। और इस टॉपिक में स्कोप अच्छा खासा है। हर तरीके से हम देखें तो साइंटिफिक कम्युनिटी में जो बायोमार्कर्स और खासकर टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी के दौरान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो सिर्फ अपनी स्टडी को ही इंश्योर करने के लिए नहीं, नए तरह के नए एस्पेक्ट को भी एस्टेब्लिश करने के लिए इसके लगातार आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। तो आई थिंक मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। एनी क्वेरी और क्वेश्चन फ्रॉम द साइड ऑफ ऑडियंस और ऑर्गेनाइजिंग कमिटी, प्लीज वेलकम। Thank you, sir, for explaining the biomarkers of toxicology. We have a few questions from the participant. I will take each question one by one. So the first question is, how can I borrow biomarker easily from research study? So this question is from Dr. Azhar Iqbal. We just borrow. Borrow means we are not supposed to be purchase the biomarker from outside. यहाँ पे जो स्टडी के दौरान बायोमार्कर की बात कही जाती है, यहाँ स्टैंडर्ड आर अवेलेबल विद सम स्पेसिफिक रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्शन हाउस like a Sigma, Eldridge,
जो जर्मन की कंपनी है, मैं यहाँ किसी स्पेसिफिक कंपनी की बात नहीं कर रहा, प्रमोट कर रहा, बस मैं ये बताना चाहूंगा कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो स्टैंडर्ड बायोमार्कर की जरूरत पड़ती है, तो हम इस तरह के एनालिटिकल टूल्स को प्रोक्योर करते हैं और फिर अपने लैब स्पेसिफिक कंडीशन में जो हमें मिल पाया है उसको हम जो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस की मदद से उसको आइसोलेट करके उसके एस्टिमेशन की बात करते हैं विद कंपेयर ऑफ कि जो हमें मिला है वो वही है ना जो हमारे स्टैंडर्ड शो कर रहे हैं। तो आई थिंक इस तरह से आप पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, sir. So the next question is how to speed up and improve biomarker testing. This is directly depend upon your available facility. अब जैसे बायोमार्कर की बात करें तो आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने स्टडी के दौरान बायोफ्लूइड के फॉर्म में, यानी आइदर ब्लड हो या फिर आपका ऑर्गन स्पेसिफिक जहां टॉक्सिसिटी दिख रही हो या वहां पे एक्यूमुलेशन हो रहा हो, तो वहां पे बायोमार्कर डेफिनेटली अवेलेबल होंगे। तो उसको हम किस तरीके से उसको वक्त रहते एक्सट्रैक्ट आउट करके उसको आइसोलेट कर पाते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा। और यदि आप वो लैग को आपने लंबा कर दिया तो हो सकता है कि वो चीजों की अवेलेबिलिटी हो, लेकिन जब तक आप उसको असेस कर रहे हो तब तक वो मेटाबोलाइज हो चुका हो, तो फिर वहां पे आपको उसका रेस्टडी भी नहीं मिल पाएगा या हो सकता है कंसंट्रेशन कम मिलेगा। जी। Okay, sir. So the next question is what is the best biomarker for monitoring the diabetes? यहाँ पे सबका अपना अपना, यानी एवरी साइंटिस्ट elaborate themselves different way, but during the diabetes mellitus, specifically इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, यहाँ पे आपका जो हीमोग्लोबिन का के साथ जो एसोसिएटेड आपका जो इंसुलिन का है कंडीशन, तो वहां पे हम शुगर और ये इसकी बात करें, शुगर और हीमोग्लोबिन के कॉम्बिनेशन की बात करें, तो वो ये हीमोग्लोबिन का जो अपना जो लाइफ स्पैन है 90 to 120 डेज, तो लास्ट 3 मंथ बिफोर यदि यदि पेशेंट है तो उसका कभी भी ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज किया होगा तो वो हमें पता चल जाता है हिस्ट्री के माध्यम से, तो वो कितना परहेज में है और दवाई किस तरह से काम कर पा रही है, तो ये पता चल पाता है। तो आई थिंक इंसुलिन स्टिमुलेशन के साथ साथ आपका उसका जो हीमोग्लोबिन में जो शुगर का स्टिमुलेशन है, ये क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है डायबिटीज मेलाइटिस के मामले में। Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. So there is queries from Aryan Chaudhary. He raised the hand. So please, can you ask the question? Yes, Aryan, please. Aryan? Sir, Aryan has left. Unmute yourself. No, Aryan is visible from my side, but his mic is mute. Aryan, can you please ask the question? So the next one is Akshay Patania. Yes, Akshay, please. Akshay, unmute yourself. So rest of the questions, query are answered in the WhatsApp group. So thank you so much for answering the question and your valuable time. Thank you so much, sir. Thank you, Tatancha, for nice coordination. And thank you, the organizing team, especially management of the Sri University and the convener of this symposium, Dr. Amit Sharma and their team. Thank you very much. I am happy to resolve the query on this topic in future also. Please share my email ID or WhatsApp number to the participant who want to redress their query in future also. Thank you. Thank you so much, sir. Now, this is an announcement for all the participants that feedback form will be shared very soon. E-certificate will be provided to those participants who will fill the feedback form.
May I now request the next eminent speaker of the day, Dr. Shamim Ahmed Bande. He is currently employed by GDC Jammu and Kashmir, Department of Geology as an associate professor. He has published more than 30 papers in various journals over his 19 years of teaching and research. In addition to 12 books, he participated in over 100 conferences. He has organized 4 national conferences, spoken as a keynote speaker, and participated in different sessions, traveled to the 11 nations additionally, won numerous honors and recognized from professional association. Now, may I request Dr. Shamim Ahmed Bande to address our esteemed participant on the topic, why do we conduct preclinical and clinical studies? Over to you, sir. आप माइक्रोफोन ऑन कर दीजिए। Good morning to all the participants. Honorable Chancellor, Honorable Pro Vice Chancellor, Honorable Registrar, Dean, Convener of this 3-day seminar, organizing dignitaries, all the dignitaries and their participants. It's an honor for me to speak in this mega 3 days national symposium on trends and innovation in pharmaceutical, biochemicals, and biosciences. No doubt, this is a era of technology, this is a era of competition, and this is a era of research. Organizing such type of events, organizing such type of conferences, seminars, debates are very essential to compete with those people who are living in the metropolitan cities, who are living in the developed countries, and also to enhance our living lifestyle, to protect ourselves from different diseases, different pathogens, how to work for the welfare of the society, how to work for developing some new techniques who are having much potential to fight against different types of diseases, and to develop a eco-living environment. I am highly thankful to the organizing secretary and the convener of this conference for giving me opportunity to speak on this mega 3 days national seminar. नो डाउट आज का ये दौर ऐसा दौर है कि जहां पे आपको अगर सरवाइव करना है तो आपको रिसर्च माइंडेड बनना पड़ेगा, आपको नई नई टेक्निक्स को डेवलप करना पड़ेगा, आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जो डिफरेंट होगा, जो एक इनोवेटिव आइडियाज जो आप लोगों के पास है, उन इनोवेटिव आइडियाज को आपने ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करना है. सो दिस इज द टारगेट. एक्चुअली इस कॉन्फ्रेंस का भी मुझे लगता है यही टारगेट होगा. लेकिन ये हमारे इस बोलने से होने वाला नहीं है. दिस कैन बी पॉसिबल ओनली जब हम अपने आइडियाज को प्रैक्टिकली लैब्स में इंट्रोड्यूस करेंगे, जब हम अपने आइडियाज को लोगों के साथ मिलकर, स्कॉलर्स के साथ मिलकर, साइंटिस्ट के साथ मिलकर, टीचिंग फैकल्टी के साथ मिलकर और यूथ के साथ मिलकर कोई नई चीज डेवलप करेंगे कि जिससे क्या होगा कि एक रेवोल्यूशन होगा साइंस में, रेवोल्यूशन होगा रिसर्च में, रेवोल्यूशन होगा हमारे जो मॉर्टेलिटी रेट जो बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभी, उसको कम करने में. लेकिन ये सारा तब पॉसिबल होगा जब हम लोग सारे मिलकर अपने आइडियाज को इकट्ठे कर और एक नई चीज को, नई टेक्निक्स को डेवलप करेंगे. और ये कॉन्फ्रेंस भी
जो आपने ट्रेंड्स एंड इनोवेशन इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोकेमिकल एंड बायोसाइंसेज रखी है, मुझे लगता है इसका भी मोटो यही है कि हम लोग किस तरह से अपने आप को, अपनी सोसाइटी को, अपने देश को और अपनी पूरी दुनिया को, अपने फ्लोरा को, अपने फाना को, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और क्लीन कर सकें। तो मैं एक बार फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूं पूरी जितनी भी मैनेजमेंट कमेटी है, ऑनरेबल चांसलर, ऑनरेबल वाइस चांसलर और जितने भी डॉक्टर अमित सर और मैडम मीनाक्षी जिन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, कि उन्होंने हमको मौका दिया आज की इस कॉन्फ्रेंस में। बहुत खूबसूरत मेरे से पहले डॉक्टर साहब बोल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बायोमार्कर्स पर, टॉक्सिकोलॉजी, क्या टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, उस पर लेक्चर दिया। मेरे को जो टॉपिक दिया गया है, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर जितना बोल सकूं कि व्हाई डू वी कंडक्ट क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल स्टडीज। हम लोगों को कैसे किया जाना है, क्या करना है, क्या क्या नई टेक्निक्स को लाना है और इसकी जरूरत क्या है, क्यों करें हम लोग प्री क्लिनिकल स्टडीज, क्या कोई इसकी जरूरत है फिर में? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना वहां पे? No, sir. No, sir. No, sir. नहीं हुई है, मैं अभी ट्राई कर रहा हूं उसको करने के लिए। देखिए, जिंदगी में भगवान ने हम लोगों को जिंदगी दी है ना, दो तरह के लोग होते हैं। एक कहते हैं कि भाई हमको मर जाना है तो हम कोई काम क्यों करें, और दूसरे लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, भगवान ने हमको जो थोड़ी सी जिंदगी दी है इस पे हमको कुछ ऐसा कुछ करके जाना है ताकि आने वाली नस्लें याद रखें, आने वाले लोग याद रखें। तो इस तरह के वो लोग जो रिसर्च में अपने पूरी जिंदगी को इन्वॉल्व कर देते हैं, चाहे वो रिसर्च प्रैक्टिकली हो या रिसर्च लोगों को इन्वॉल्व करने की हो, उसमें वो अपनी जिंदगी को इसलिए इन्वॉल्व करते हैं, उनका अपना सेल्फ कोई नहीं होता। वो सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं, आने वाले जो हमारा यूथ है, हमारी जो जनरेशन है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको क्या फायदा दे सकते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शेयर नहीं हो रही है स्क्रीन, मैं ट्राई कर रहा हूं। 1 मिनट आप मेरे को देंगे? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से जिनकी ये है ना, इसको करो, क्लिक करो, आप शेयर करो। आप, मुझे लगता है आया हो गया, इसके हो रहा है शेयर? Yes, sir. आया हो गया शेयर? सर स्क्रीन तो शेयर हुई बट आपकी पीपीटी विजुअल नहीं है। पीपीटी विजुअल नहीं है, जी। थोड़ा सा बेसिकली जहां पे मैं हूं यहाँ नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए पॉर्डन मी फॉर फ्यू सेकेंड। आप चेक करें जरा। नो सर। कैसे नहीं आ रही? स्टॉप करें। विंडोज से जा रहा है वहां से। स्लाइड शो हो, अब अभी चेक करना प्लीज।
सर आपकी स्क्रीन विजिबल है बट पीपीटी नहीं आ रही है, हम लोगों को शो ही नहीं हो रही है, तो सर आप हमें भेज दो, हम शेयर कर देते हैं यहाँ से। हम आपको व्हाट्सएप पे भेज दें? यस सर। अच्छा, व्हाट्सएप में मैम के व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। आप तब तो ट्राई करो। यहाँ पे नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है ना, टेक्नोलॉजी तो हम लोग मैंने भेज दिया मैम के आ गया मैम। ओके सर, ओके। So just give me 5 minutes. ओके 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 ओके, मैं भी ट्राई करता हूँ तब तक अगर हो जाता है। ओके सर। तो लाइफ में क्या होता है, लाइफ में कुछ करने के लिए आपको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, किसी चेयर की जरूरत नहीं है, किसी पावर की जरूरत नहीं है। बस लाइफ में कुछ करने के लिए विल पावर होना चाहिए। इफ यू थिंक यू आर राइट बट स्टिल पीपल क्रिटिसाइज यू, डोंट वरी, डोंट बॉदर, बिकॉज इन एवरी गेम ओनली प्लेयर्स मेक्स ऑडियंस, ओनली ऑडियंस मेक्स नॉइज। प्लेयर्स हमेशा गेम खेलते रहते हैं और फिर जीत उन्हीं की होती है। मैं 1 सेकंड में मैं भी कोशिश कर रहा हूं, अगर शेयर हो जाता है हमारे यहाँ से। हो रहा है, आप चेक करना। नो सर, नो सर। नहीं, अगर होगा तो आप मुझे बताना फिर, ठीक है ना? ओके सर। Sir, now it is visible. Visible ना? Yes, sir. So the topic is why do we conduct clinical and preclinical studies? सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल में डिफरेंस क्या है। देखिए, अभी आने वाली स्लाइड्स में मैं सब बता दूंगा, लेकिन इसकी जरूरत क्या है, क्यों करना पड़ता है हम लोगों को ये सब चीजें। मैंने पहले ही कहा था कि आज की इस डेट में जब इतनी तेजी से साइंस रिसर्च इतनी तेजी से बढ़ रही है, लोग आसमान पे चांद पे पहुंच गए हैं, तो हम लोगों को दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोगों को भी नई नई चीजें डेवलप करनी है ताकि हम पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक चीज को टारगेट कर सकें। दिस कैन बी ओनली पॉसिबल जब हम क्लिनिकल स्टडीज करेंगे, जब हम प्री क्लिनिकल स्टडीज करेंगे। हम लोग डिजीज को कैसे हुई, कहां से हुई, ओरिजिन कहां पे है, पर्टिकुलर सेल्स कौन सा इन्वॉल्व है, जब हम इन सब चीजों को जब देखेंगे तो फिर हम लोग पर्टिकुलर तरह की ड्रग्स का उसको हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं। और जब हम उसको पैदा करेंगे एक पर्टिकुलर टारगेट को ध्यान में रखकर, तो उससे ना तो नेचर को नुकसान होगा, ना हमारी बॉडी के किसी दूसरे पार्ट्स को नुकसान हो सकता है। सो हमारा टॉपिक जो था, व्हाई डू वी कंडक्ट clinical and preclinical studies. So dear friends, what do you think? Have you ever had to take a medicine to treat an illness? क्या आपने कभी ली है दवाई कभी खाने के लिए? क्या बुखार हुआ, सर दर्द हुआ, किसी बॉडी के किसी पार्ट में हुआ? Have you ever wondered how researchers determine if the medicine you take they are safe and effective? आपने देखा कभी क्या वो सेफ थी? नहीं। आप मेडिसिन की छाप पे जाते हो और आप डॉक्टर से बात करते हो कि नहीं, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, काइंडली गिव मी डोलो और गिव मी पैरासेटामोल, या कोई और चीज ले सकते हैं। क्या आपने देखा कि रिसर्चर की कितनी मेहनत लगी होगी कि उस टेबलेट को, उस पिल को, उस मेडिसिन को डेवलप करने के लिए उसने कितनी चीजों पे रिसर्च किया होगा? Preclinical trials and clinical trials are the processes by which scientists test drugs and devices to see if they are safe and effective. ये सबसे पहले लैब्स में पूरी रिसर्च की जाती है।
रिसर्च करने के बाद फिर उसका सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या वो सेफ है। नंबर 1 पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सम टाइम हम लोग ड्रग्स को लेते हैं लेकिन उसके साइड इफेक्ट कितने हैं, वो कितना हमको नुकसान देता है, ये सबसे पॉइंट है। और दूसरे नंबर पर रिसर्च, जब हम प्री क्लिनिकल रिसर्च करते हैं, स्टडीज करते हैं, तो देखते हैं कि हाउ मच दैट पर्टिकुलर ड्रग इज इफेक्टिव। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अ प्री क्लिनिकल ट्रायल्स? देखिए, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स एक लेबोरेटरी टेस्ट है ऑफ अ न्यू ड्रग और अ न्यू मेडिसिन डिवाइस, usually done on animal subjects to see if the hoped for treatment really works and if it is safe to test on humans. हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर, जैसे आप देख सकते हैं, हम रैबिट को लेते हैं, माउस को लेते हैं, काकरोच को लेते हैं, ग्रास ऊपर या किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को लेके, लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर उस पर लैब में टेस्ट किया जाता है। और अगर वो लगा हमको कि वो इफेक्टिव है, सेफ है, देन हम लोग फिर ह्यूमन बींग्स पे जाते हैं। लेकिन ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं? ये तभी हो सकती हैं जब हम लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगा, जब हमारे पास कोई लैब होगी, जब हमारे पास कोई डिवाइसेस होंगे, जब हमारे पास कोई ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा जहां पे ये सब चीजें हम कर सकते हैं। There are 2 types of research, that is, one is basic and 2 is applied. Basic research, that is discovering new facts about how things work. किस तरह से ये चीजें काम करेंगी, how they are made, उनको हम लोग कैसे बनाएंगे, or what causes a biological events to occur. Basic research can explore a topic, explain a topic, or describe a topic. हम लोगों को सबसे पहले तो टॉपिक को ढूंढना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है और उसको फिर डिस्क्राइब करना है। ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर लैब में होंगी। और ये सारी चीजें कब होंगी? जब हम लोगों को किसी एक पर्टिकुलर चीज पे रिसर्च करने के लिए एक लैब में हम लोग काम करें। फॉर एग्जाम्पल, Hello. Hello. So you are not audible. Sorry for the technical issue. Because of some reason, sir is not with us. So just wait for 5 minutes. भी बढ़ जाती है। So how does we perform a clinical trial? There is a different phases: phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. And we also conclude a phase 0, that is a microdosing. In a phase 1, we have perform a safety, and phase 2 we perform efficacy, and in phase 3 there is awareness towards the drug, and in phase 4 there is a post-marketing surveillance. So after this, IND approves the drug and the market formulation goes out.
Before clinical trials, we perform preclinical studies. Preclinical studies are performed in various stages. The first one is acute toxicity, the second one is chronic toxicity, and then subchronic. In acute toxicity, we perform 6 month or within the 1 month to 6 month protocol. And in a subchronic, we perform in years, 2 years. And I'm not audible. so now you are audible. अच्छा तो मैं स्टार्ट करूं फिर मेरी यहाँ बेसिकली आई एम आउट ऑफ स्टेशन ना तो किसी दूसरी कॉन्फ्रेंस
डोज इसकी बढ़ गई तो ये आपको साइड इफेक्ट दे सकती है। उस डोज को कितना देना है, कैसे खानी है, ये सारी चीजें उस रिसर्च में देखी गई होती हैं कि क्या ये सेफ थी या सेफ नहीं थी। Next, preclinical trials and clinical trials are the processes by which scientists test drugs and devices to see if they are safe and effective. आपको मैंने अभी बताया कि वो साइंटिस्ट जितने भी होते हैं, जितने भी रिसर्चर होते हैं, वो लैब्स में किसी पर क्वेश्चंस को हम लोग स्टडी करेंगे, फिर हम एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के बाद देन वी विल गो फॉर अ प्रैक्टिकल, दैट इज हम कंडक्ट करेंगे उस पे रिसर्च पूरी। फिर वो कंडक्ट करने के बाद चाहे वो डाटा कलेक्शन हो, चाहे वो रिसर्च का हो, चाहे वो कंपैरेटिव हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनिज्म पे उसका एक्शन हो, फिर हम एनालिसिस करेंगे कि इस सारे चीजें करने के बाद जो एनालिसिस हमारा आ रहा है, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट में कितना कंपैरेटिव जब हमने किया इफेक्टिव था और कितना ये सेफ था। फिर हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, फिर सिंथेसिस करेंगे, फिर उसकी सिग्निफिकेंस करेंगे, फिर बिलीफ एंड देन एक्शन। तो ये ऐसा सिंपल रिसर्च नहीं है कि हमने किसी पर्टिकुलर चीज को लिया और उसको टेस्ट किया और देन उसको फील्ड में लेके आ गए। इसके लिए एक बहुत लेंथी प्रोसेस है और लेंथी प्रोसेस करने के बाद हम किसी भी चीज को डेवलप करते हैं, जो फिर वो अगर सेफ होगी, इफेक्टिव होगी, तो उसको हम लोग एक्शन में लेके आएंगे। फिर डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट दो तरह से होता है, एक फिजियोलॉजी से और एनाटॉमी से होती है। और क्लिनिकल रिसर्च ब्रिज जो आप देख सकते हैं, जेनेटिक मार्कर्स है, अभी मार्कर्स पे बोल रहे थे सर, अदर मार्कर्स ऑफ ए रिस्क देखना है, मार्कर्स ऑफ एक्सपोजर देखना है, मेथोडोलॉजिकल स्टडीज होगी, फिर डिस्क्रिप्टिव एंड इकोलॉजिकल स्टडीज होगी, फिर केस कंट्रोल स्टडीज होगी, फिर कोहोर्ट स्टडीज होगी, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे। ये सारी स्टडीज करने के बाद फिर ट्रायल्स पे आ जाएंगे, फिर इंटरवेंशन विद हाई रिस्क ग्रुप के साथ, फिर कम्युनिटी इंटरवेंशन, फिर पॉलिसी बनेगी और फिर जाके एक प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन, और फिर उसको हम लोग जाके ग्राउंड में लाएंगे और जाके फिर वही रिसर्च जो है वो आने वाले वक्त में हमारे किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन्स के, जहां कोई ऑर्गन इन्वॉल्व है किसी भी ड्रग से,
किसी भी डिजीज से, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर डू वी गेट न्यू आइडियाज फॉर रिसर्च? हमको ये आइडियाज कहाँ से लेने हैं, कहाँ से मिलते हैं? Dear friends, ideas comes from all kinds of scientists and medical professionals. Who do research in universities, government labs and in corporations. तो आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं कि अगर हम घर बैठ के कोई आइडिया बनाए तो ऐसा नहीं बनता है, किसी ग्राउंड में स्पीच करने से नहीं मिलेगा। ये आइडियाज आपको किसी यूनिवर्सिटी से मिलेगा, आइडिया आपको किसी कॉलेज से मिलेगा और आइडिया किसी लैब से मिलेगा जहां पे लोग किसी पर्टिकुलर चीज पे काम कर रहे हैं। देखिए, टेक अ मिनट्स टू डिस्कस व्हाट इज अ प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। क्या है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च? इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिक और अप्लाइड में? एंड व्हाट सिकनेस और डिजीज वुड यू लाइक टू सी एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर? देखिए, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों से शेयर किया। A laboratory test of a new drugs or a new medical device usually done on animal subjects, किसी भी एनिमल्स पे। मैंने आपको बताया जो मोस्ट कॉमन एनिमल, जैसे हम लोग माउस को यूज करते हैं, हम रैबिट पे भी करते हैं, हम कॉकरोच पे काम करते हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं इन ड्रग्स पे, या किसी और एनिमल्स पे भी कर सकते हैं, टू सी इफ दैट ड्रग और डिवाइस इज सेफ टू टेस्ट ऑन ह्यूमंस। बेसिक रिसर्च इज डिस्कवरिंग फैक्ट्स by exploring, describing और explaining। तीन तरह से बेसिक रिसर्च जो है वो डिपेंड करती है फैक्ट्स जो कि एक्सप्लोर करते हैं हम लोग, फिर डिस्क्राइब करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। अप्लाइड रिसर्च इज यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बेसिक रिसर्च टू फाइंड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन फॉर इलनेस। तो ये दो डिफरेंस मैं बता दिया। बेसिक रिसर्च क्या है? जब हम कोई किसी आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं, फिर डिस्कशन होती है, फिर उसके ऊपर काम किया जाता है। और अप्लाइड क्या हो गया कि वो जो आइडिया हमने वहां से कलेक्ट किया था, वो जो चीज हमने वहां से बनाई थी, उसको फिर इम्प्लीमेंट करना किसी भी डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी बीमारी के खिलाफ करते हैं इस्तेमाल। एग्जाम्पल जैसे लंग कैंसर है, डायबिटिक्स है, हार्ट डिजीज वगैरह है, इन सब के खिलाफ आज की डेट में डिफरेंट तरह की रिसर्च के बाद हम लोग डिफरेंट तरह की ड्रग्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। There are several steps involved with doing a preclinical trials. That's कौन से? Number one, identify a drug test target. Number two, develop a bioassay. Number three, screen the drug in assay. Establish effective and toxic doses. File for approval as an investigational new drugs. So there are 5 different steps now involved with doing a preclinical trials. Steps in doing a preclinical trials. Step 1, get an idea for a drug target. सबसे पहले तो ये पॉइंट मैंने पहले बोल दिया आप लोगों को। Drug usually acts on either cellular or genetic chemical in the body known as target. जिस भी पर्टिकुलर सेल पे या जेनेटिक केमिकल्स है जिस पे हमको एक्ट करना है, जिस पे हमको टारगेट बनाना है, उसको हम लोग टारगेट सेल भी बोलते हैं, विच आर बिलीव टू बी एसोसिएटेड विद डिजीज। और जिस पे हमें लगता है कि ये मिली हुई है किसी ड्रग्स के लिए और यहीं से डिजीज का ओरिजिन हो रहा है, तो हम उस पर्टिकुलर सेल्स पे एक्ट करते हैं। Scientists usually use a variety of techniques to identify and isolate the individual targets to learn more about their function and how they influence disease. तो हम लोग जो रिसर्चर लोग हैं वो इसी चीज पे करते हैं, वो वैरायटी ऑफ टेक्निक्स या कुछ ऐसी चीजों को लेके आते हैं जो आइसोलेट करते हैं इंडिविजुअल टारगेट्स को, जो आइडेंटिफाई करते हैं पर्टिकुलर सेल्स को, और उस पर्टिकुलर सेल्स पे क्या नुकसान हो रहा है, कैसा इफेक्ट हो रहा है और किस तरह से हम लोग उस पर्टिकुलर सेल्स को बाकी सेल्स को इन्फेक्ट करने से रोक सकते हैं। तो वो एक टारगेट सेल पे टारगेट किस्म की ड्रग को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। कंपाउंड्स आर देन आइडेंटिफाइड that have various interactions with the drug targets that might be helpful in treatment of a specific disease. फिर हम लोग एक कंपाउंड को डिस्कवर करते हैं, रिसर्च के जरिए से नया कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन वो कंपाउंड ऐसा होना चाहिए कि जिस कंपाउंड से एक पर्टिकुलर टारगेट सेल को ही नुकसान हो, बाकी उसके जो एडजाइनिंग, जो उसके एसोसिएटेड सेल हैं, जो इसके इर्द गिर्द वाले सेल हैं, नेबरिंग सेल्स हैं, उनको कोई नुकसान हो। ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं? दिस कैन बी ओनली पॉसिबल जब हमने प्री क्लिनिकल स्टडीज की हुई हो। जब हमने प्री क्लिनिकल स्टडीज किसी
पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे किया हो तो तभी हम लोग उसको ह्यूमन बींग्स पे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग पे नहीं कर सकते। ह्यूमन बींग पे रिसर्च करने से पहले हम लोगों को प्री क्लिनिकल जो स्टडीज करनी पड़ेगी। फाइंडिंग द राइट टारगेट इज नॉट इजी। फॉर एग्जाम्पल Parkinson's disease एग्जाम्पल देखिए, Parkinson's disease a disease which causes deterioration of the central nervous system over a period of time। आपका central nervous system को इस हद तक डैमेज कर देता है कि this disease often impairs the patient's movement, speech and other function। इतनी खतरनाक किस्म की ये डिजीज है कि आपको इम्पेयर बना देता है, ना तो आप बोल सकते हैं, ना मूवमेंट कर सकते हैं, या बाकी हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जो है इससे इन्वॉल्व हो जाते हैं। How is Parkinson's treated? Where should the focus be? अब हमको कैसे इतनी खतरनाक डिजीज जिससे एक सिम्टम नहीं हो रहा है, वो मल्टीपल सिम्टम शो कर रहा है, मल्टीपल ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, तो हम लोग कैसे उस डिजीज पे कंट्रोल कर सकते हैं जो एक पर्टिकुलर चीज को नुकसान नहीं दे रही है। कहता है कि tremors or shaking occur when cells in one part of the brain die। इतना एक सेल जब मर जाए, these cells communicate using a chemical called dopamine। Drugs that replace dopamine work only for a few years। Others Parkinson's symptoms जैसे डिप्रेशन है, स्लीप डिसऑर्डर है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन है, have other causes। Another sign of Parkinson's disease, many cells have deposit of a proteins। 4 drugs companies are developing drugs to counter synuclein, even though nobody knows if it is cause or a consequence of Parkinson's। अभी तक ये नहीं पता कि ये cause है या consequences है Parkinson's। Synuclein could be like a tombstone, a market, not a cause of a cell death। Drugs target specific point in biochemical pathways। Biochemical pathways are series of chemical reactions occurring within a cell। In each pathway, a principal chemical is modified by chemical reaction। Example of different types of biochemical pathways, ये आप देख सकते हैं, ये हमने पूरा एक ग्राफ बनाया है। Any step in the pathway, for example, from A to B or B to C might be a target for the right drug। In a biochemical pathway, each step usually involve either drugs atoms, that is synthesis, or taking certain atoms away, that is degradation, हटा देना या उसको बना देना, to produce a different compound। These steps are often enabled by enzymes that are specific for that step। Drug developments can be aimed at blocking or enhancing the enzymes or directly reacting the drug with the compounds in the pathway। Steps in doing a preclinical trials। Step number 2, develop a bioassay। A bioassay is a live system that can be used to measure drug effect। इसमें किसी लिविंग सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं। इट मे बी अ कल्चर ऑफ सेल और ऑर्गन और अ होल एनिमल, या तो किसी पर्टिकुलर सेल को कल्चर करेंगे या किसी ऑर्गन को या फिर पूरे के पूरे किसी एनिमल को। फॉर एग्जांपल जेब्रा फिश एम्ब्रियोज, you can see effects of drugs on bone density, blood vessels growth and many other system of zebrafish। Steps in doing a preclinical trials, that is step number 3, screen the drug in the biopsy। This is the actual test of the drug on the chosen biopsy। This will determine if the drug is safe and if it is effective in the biopsy before it is ever tested in human being। I have already discussed कि हम किसी भी प्री क्लिनिकल स्टडीज हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि किसी भी चीज को ह्यूमन बीइंग पे इंप्लीमेंट करने से पहले, उस पे इस्तेमाल करने से पहले हम लोग डिफरेंट तरह के रिसर्च, डिफरेंट तरह की लैब से होते हुए डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स पे, एनिमल्स पे यूज करके उसका इफेक्ट और उसका साइड इफेक्ट और उसका सेफ्टी को हम लोग देखते हैं। स्टेप्स नंबर 4, एस्टेब्लिश व्हाट डोजेस amount of drug is safe and what doses amount of the drug is toxic। मैंने ऑलरेडी कहा कि जब भी अब पैरास्टामोल इज यूज्ड फॉर अगेंस्ट फीवर, तो अब किसी को फीवर है और वो जाके कहे कि डॉक्टर मुझे पैरास्टामोल दीजिए और डॉक्टर आपको 2 पिल्स देता है, 2 टेबलेट्स देता है और दोनों आप खा जाए, तो वो एक जो पर्टिकुलर अमाउंट आपने ड्रग का लेना था वो नहीं हुआ, वो ज्यादा हो गया तो वो आपके लिए नुकसान हो गया। ये
डोज भी देखना है कि कितनी डोज जो है वो आपके लिए सेफ है और कितनी डोज जो है अगर उस डोज को एक्सीड करते हैं तो वो आपके लिए टॉक्सिक हो जाती है। ये भी आप रिसर्च के जरिए से लैब में ही देख सकते हैं, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल स्टडीज के ही देख सकते हैं। एस्टेब्लिश व्हाट डोजेज अमाउंट ऑफ द ड्रग इज सेफ एंड व्हाट डोजेज amount of the drug is toxic. Most drugs have a toxic level or an amount at which the drug will become harmful instead of helpful. अब आपने अपने बचाने के लिए कि मेरे सर में बहुत दर्द है तो मुझको एनासिन टेबलेट लेनी है, और वो टेबलेट आपको 1 लेनी थी और आपने अपनी ही डॉक्टरी वहां पे लगाई और आपने डबल डोज ले लिया, तो वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं रही बल्कि अब वो हार्मफुल हो। Step number 5, application is made to the Food and Drug Administration as an investigation new drug. IND must show how the drug is manufactured. सबसे पहले कैसे ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कैसे उस ड्रग को तैयार करना है। Appears, that is color, solubility, melting point, particular size, moisture content, इसमें कितने कितने होंगे, कलर कैसा होना चाहिए, उस solubility point कितना है, melting point कितना है, साइज कितना है, moisture content कितना होना चाहिए, formulated, that is pills, liquids या inactive ingredients, कैसा बनाना है, आपको pills बनाना है, liquid में लेके जाना है या कोई और चीज बनानी है, will be analyzed for purity, concentration, stability, will be tested for safety. This will be on the basis for allowing first use in human being. और ये भी प्री क्लिनिकल जो स्टडीज है बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको हमको लिक्विड में तैयार करना है, उसको हमको कैप्सूल में तैयार करना है, पिल्स में तैयार करना है, उसको या किसी और चीज में तैयार करना है, उसका कलर क्या होना चाहिए, उसका सॉल्युबिलिटी पॉइंट कितना होना चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, उसका साइज कितना होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें बैलेंस होंगी तभी वो आपके लिए सेफ बन सकती है। थिंक ब्रेक, how are these steps like the steps of the scientific method? Why would research scientists use a bioassay instead of a human subject to test a new drug? What percentage of drugs do you think get this far in the process? ये आपने सोचा कभी? They really are the applied step of the scientific method. बहुत 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 important है. State the problem. Will a new drug be effective and safe? क्या ये ड्रग जो आपने नई बनाई है कोविड-19 के खिलाफ जो अभी बनी, कितनी टाइम लग गया, कितने लोग सफर किए, लेकिन जब तक उसकी रिसर्च, जब क्लिनिकल प्री क्लिनिकल स्टडीज उसकी कंप्लीट नहीं हुई तब तक उसको मार्केट में नहीं लाया गया, तब तक उसको WHO ने या जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। सर्टिफिकेट तब मिला जब देखा गया कि दिस ड्रग इज नॉट harmful, this drug is safe, and now this can be used against this disease. Gather background information. आप लोगों को उसकी पिछली कि ये ड्रग जब पहले इस्तेमाल की गई या पहले कोई हुआ रिसर्च किया गया तो वो इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करनी है। The scientist will rely on past research and the basic research done before their proposal trial. हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो हम लोग पहले रेफरेंसेस में जाते हैं। आपने देखा रिसर्च पेपर्स स्टडी किए जाते हैं, डिफरेंट लोगों के वर्क को देखा जाता है और फिर उस वर्क को देखने के बाद फिर हम लोग किसी फील्ड में जाते हैं कि नहीं, अगर ये पहले काम हुआ और ये सेफ था, इफेक्टिव था, तो आगे भी हम लोग इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग ला सकते हैं और ये सेफ है कि नहीं है। From a hypothesis, उस रिसर्च से for new drugs, the hypothesis is that the drug will be effective and safe. Otherwise, the scientists would not spend the time and efforts on the preclinical trials. और अगर लग रहा है कि पुरानी गैदर की हुई इंफॉर्मेशन के बेस पे कि ये जो ड्रग पहले हम लोगों ने इन पेपर से हमको पता चल रहा है कि ये इफेक्टिव नहीं थी, सेफ नहीं थी, तो फिर जो हमारे साइंटिस्ट है, बिकॉज मैंने कहा कि आजकल कमी अगर किसी के पास है तो ओनली टाइम की है, तो फिर वो उसमें टाइम स्पेंड नहीं करते। Conduct an experiment. This involves screening the drugs in the bioassay. मैंने पहले कहा कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फिर वो जो हमारा माइंड में क्वेश्चन थे, जो रिसर्च था, उसको फिर हम लोग कंडक्ट करते हैं। एनालाइज डाटा, फिर हम लोग डाटा को एनालाइज करते हैं। डिटरमाइनिंग सेफ, उसमें सेफ्टी कितनी है, टॉक्सिक डोजेस कितनी हो जाएंगी, वेदर द ड्रग वाज इफेक्टिव, और ये ड्रग कितनी इफेक्टिव है, क्या इससे फायदा हो सकता है, क्या इसका कोई नुकसान तो नहीं है, क्या ये हमारे पर्टिकुलर जो टारगेट सेल्स पे जिसको हमने करना है, क्या उस पे ये इफेक्ट कर रही है। फार्मिंग अ कंक्लूजन, विल इट बी एडवांटेजियस टू कंटिन्यू टेस्टिंग द ड्रग और नॉट, क्या इसका फायदा है,
क्या हम इस रिसर्च को कंटिन्यू करें? क्या ये हम लोगों के लिए सेफ है? क्या ये हम लोगों के लिए इफेक्टिव है? क्या आने वाले वक्त में ये पर्टिकुलर किसी ड्रग डिजीज के खिलाफ ये लड़ सकती है? इज इट सेफ टू कंटिन्यू ऑन एंड टेस्ट द ड्रग ऑन ह्यूमन नेक्स्ट? क्या अब ये ड्रग रिसर्च करने के बाद, प्री क्लिनिकल स्टडीज करने के बाद, क्या अब हम इस ड्रग्स को, इसके सारे पैरामीटर्स की स्टडी करने के बाद अब हम ह्यूमन बीइंग पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? मेनी टाइम्स द रिस्क associated with using human outweigh the potential benefit. Using a bioassay like cells or fish embryos, preventing unnecessary harm to people and pets. अब पेट्स और पीपल्स को बचाने के लिए हम लोग ये सेल्स को या फिश एम्ब्रियो को यूज करते हैं इन सब को टेस्ट करने के लिए. Out of every 5,000 new compounds identified during the discovery process, only 5 are considered safe for testing in human volunteers after preclinical evaluations. देखिए, अगर ये प्रोसेस ना होता तो देखिए 5,000 नए कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग सिर्फ 5 कंपाउंड्स को कहते हैं नहीं, these are safe, now these can be used for further research. Steps to new drug discovery, preclinical trials. Get idea for drug target, develop a bioassay. पहले आपको आइडिया डेवलप करना है, फिर देन बायोअसे किसी लिविंग सेल्स पे या लिविंग एम्ब्रियो पे या लिविंग ऑर्गेनिज्म, देन स्क्रीन केमिकल कंपाउंड इन एसे, उस पे फिर यूज कीजिए. एस्टेब्लिश इफेक्टिव एंड टॉक्सिक कंपाउंड, वो कंपैरेटिव आप देखिए कि कितनी इफेक्टिव और कितना उसका कोई नुकसान तो नहीं है, सेफ है. फाइल फॉर अप्रूवल एज इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग, IND को लीड टू क्लिनिकल ट्रायल्स. फिर उसके बाद ये सब चीजें करने के बाद फिर देन हम क्लिनिकल रिसर्च पे जाएंगे, क्लिनिकल स्टडीज पे जाएंगे और फिर फाइनल अप्रूवल लेकर उसको मार्केट में लाएंगे. कैन यू समराइज द प्रोसेस? विद अ पार्टनर राइट ऑफ प्री क्लिनिकल ट्रायल इज यूज द फॉलोइंग वर्ड्स. नंबर Hello. So you are not audible. Biochemical. So your voice is breaking. अब आ रही है आवाज? Yes, sir. Yes, sir. हेलो. Yes, sir. बस अब कंक्लूड करने जा रहा हूँ. यहाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है. ड्रग्स, देखिए मैंने पहले ही कहा कि कैन यू समराइज द प्रोसेस विद अ पार्टनर और योर ग्रुप, राइट अ समरी of the preclinical trial process, use the following words to help you. Number 1, drug. What kind of drug? Which drug? Either it is safe, कितनी सेफ है, कितना टॉक्सिक, इसका कोई नुकसान तो नहीं है. इफेक्टिव, हाउ मच इफेक्टिव दिस ड्रग इज, क्या हम इसको रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं? देन बेसिक रिसर्च, देन अप्लाइड रिसर्च, देन फिर टारगेट, देन बायोकेमिकल पाथवे, बायोएसे, टॉक्सिक, देन इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग्स, फिर हम लोग उस पे जाते हैं. सो इन द कंक्लूजन मैं इतना कंक्लूड करूंगा कि प्री क्लिनिकल स्टडीज के बगैर किसी भी रिसर्च में आप एडवांसमेंट आगे बढ़ नहीं सकते हैं. ये सारी की सारी रिसर्च डिपेंड करती है आपकी प्री क्लिनिकल स्टडीज पे. उस प्री क्लिनिकल स्टडीज में चाहे आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने इंफॉर्मेशन रिसर्च पेपर से कितनी ली है, आपने किस ऑर्गेनिज्म पे उस पे टेस्ट करना है, और उस टेस्ट करने के बाद फिर उसकी सेफ्टी को मेजर करना है, उसके सेफ्टी के बाद उसका इफेक्टिवनेस को देखना है, और फिर जब आपने देखा कि इसका कोई टॉक्सिक नहीं है और इसको अब हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको अब ह्यूमन बीइंग पे इफेक्ट कर सकते हैं, तो फिर क्लिनिकल स्टडीज पे जाते हैं. फिर हम लोग उसको प्रिपेयर किया जाता है, फिर हम लोग उसको पिल्स में लेके आते हैं या उसको हम लोग लिक्विड में लेके आते हैं या किसी और चीज में लेके आते हैं. फिर उसके डोजेस को देखे जाते हैं कि ये कितनी डोज जो है पर्टिकुलर किसी डिजीज के अगेंस्ट दी जा सकती है. तो आज के इस दौर में जब आपने देखा कि मल्टीपल किस्म की नई किस्म की डिजीज भी आ गई है और नई ड्रग्स भी आ गई है. आपके ड्रग्स, जैसे हम लोग पहले कोई ड्रग यूज करते थे तो वो आपके साइड इफेक्ट बहुत सारे होते थे, आपकी किडनी को इन्वॉल्व करता था, आपके लंग्स को, आपके हार्ट को इन्वॉल्व करता था. लेकिन आज की जो रिसर्च है, जो अब की रिसर्च है, क्योंकि आप एडवांस बहुत ज्यादा टेक्निक्स आ गई हैं, उससे इस तरह की जब हम लोग स्टडी करते हैं, प्री क्लिनिकल स्टडीज कर लेते हैं, और उससे फिर हम लोगों की जो ड्रग है वो पर्टिकुलर एक सेल्स को टारगेट करती है, उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है. तो मेरा मानना यही है कि हम लोगों को प्री क्लिनिकल और
क्लिनिकल स्टडीज पे ज्यादा जोर देना चाहिए, किसी भी नई चीज को, नई ड्रग्स को, नई कोई डिस्कवरी को लाने के लिए, और ह्यूमन बीइंग पे तब उसको इम्प्लीमेंट करना है जब हम लोगों को श्योरिटी हो जाए, 100% सेटिस्फेक्शन हो जाए आफ्टर कंप्लीट रिसर्च वर्क डन इन द रिसर्च लैब, अच्छी रिसर्च लैब से, कि ये नुकसान नहीं है बल्कि ये इफेक्टिव है और ये सेफ है। इससे आने वाले वक्त में हम लोग पर्टिकुलर किसी एक चीज को, डिजीज को, या कोई और जो चीज है जिससे नुकसान हो रहा है, उससे हम रोक सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैं जिस जगह पे हूँ, आई वाज ऑन वे, यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो बीच में प्रॉब्लम रही कि आप लोग मेरे को नहीं सुन नहीं पाए सही ढंग से। मेरे को भी थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आई, बट फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों के साथ सिंपल वे से, जो मेरा रिसर्च जो लंबा पेपर था उसको मैंने थोड़ा ब्रीफ करके सिंपल वे से कोशिश की बताने की, कि मैं आपको बता सकूं कि प्री क्लिनिकल स्टडीज और क्लिनिकल स्टडीज क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, कोशिश की मैंने। Once again, I am highly thankful to all the dignitaries, participants, and the organizing committee for giving me opportunity to speak on this topic. Thank you. Thank you so much, sir, for your words and wisdom. It will be a great pleasure for us to listen you again in our future event. Thank you once again, sir. So we have some questions from participants. So the first question is why there is an introduction of phase 0, that is microdosing. Ma'am, I'm not audible. I'm not. So You're the not first, audible. my first question You is just why. please, you just send me my ma'am question na on my WhatsApp number na. Actually, मोबाइल से स्क्रीन पे कर रहा हूँ तो और आवाज कट के आ रही है। Okay, sir. मैं बोल सकता हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है। Sir, I will share the question in WhatsApp, then you will answer there. हाँ, मैं बीच बीच में Okay, sir, thank you so much. हेलो। Yes, yes, sir, I will share the questions and you will answer there then in WhatsApp group. Hello. Hello. So now this is an announcement for all the participants that the feedback form will be shared and the e-certificate will be provided to those participants who will fill the feedback form. I request all the participants to make their presence on second day as well. Tomorrow's session will start from 9:50. We will provide the link through mails. All are requested to join the link to success the symposium. The link of feedback form will be open for 30 minutes. Kindly fill the form. Thank you so much. Thank you. You may leave now.